Hope my slides are visible to you and my voice is audible to you. So visible and audible. Thank you, sir. Thank you, Vinay sir. तो डे 5 देखिए सर, अभी आधी जर्नी में आ चुके हैं. सबर आप लोगों ने काफी रखा है. अगर 5 दिन का सबर और रखेंगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू फ्रेम द होल प्रोसेस ऑफ रिसर्च इन योर माइंड. आप बना पाएंगे, यू विल एबल टू स्टार्ट डूइंग वर्किंग ऑन इट. फर्स्ट स्टेप टू रिसर्च. अच्छा सर, इससे पहले आई वांट टू डिस्कस वन पॉइंट. मैं कल की क्लास को रिवाइज कर रहा हूँ फटाफट. एंड कुछ लोगों ने मुझे बोला कि सर जो आपने कल कराया, जस्ट जॉट डाउन द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच so that we can follow it. So for that purpose I have written a step by step approach जो कल की क्लास में किया था, ताकि आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम तक पहुंच सके. मैं उसको फटाफट रिवाइज कर रहा हूं. आपको कहीं भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी. सबसे पहले we have done that. First select your subject. I am presenting the screen. Yes. So first select your subject. Let us say you are from law field, from mathematics, from commerce, from management, whatever field you have. So I am taking an example of law. Let us say I am from the field of law. Then narrow down the research area. Sir, law ke andar there are a lot of disciplines. Criminal law, there are special acts, right? So there are a lot of laws. Let us say I have taken the criminal law. Let us say I am interested in criminal law. Find the list of top 50 journals in your research area that you have selected. Means मैंने criminal law select किया, तो criminal law में I have to find top 50 journals in that area. And this is the link I have given to you. This is a website. आप इस website के through आपको किसी भी field में, किसी भी area पे top 50 journals मिल जाएंगे. ये hyperlink आप इसको open कर सकते हैं. Now select the appropriate journal for your selected research area. See sir, criminal law में मैंने top 50 journals find out कर लिए. But again criminal law के अंदर भी बहुत सारे सब areas आएंगे जो अलग अलग sections को, अलग अलग चीजों को deal करते होंगे. अभी इस top 50 journals में वो सब journals होंगे जो अलग अलग topic को deal करते होंगे. Let us say आपका जो topic है वो A interested है, criminal law के अंदर कोई A topic है. मान लो कि क्रिमिनल लॉ के अंदर मैं केस ले रहा हूं मर्डर्स का. ओके, तो इन जो टॉप 50 जर्नल्स मैंने क्रिमिनल लॉ में निकाले, इनमें से वो कौन से जर्नल्स हैं जो मर्डर्स के ऊपर पेपर्स एक्सेप्ट करते हैं, राइट? जो मर्डर्स के ऊपर केस एक्सेप्ट करते हैं. लेट अस से इन 50 में से आई फाउंड 10 जर्नल्स व्हिच आर स्पेसिफिक टू मर्डर्स. फाइन. Take an idea from the name of the journal. I mean to say आपके पास दो ऑप्शंस हैं इस चीज को फाइंड आउट करने के. या तो आप उसके नेम से आइडिया लगा लो, आपको नेम से पता लग जाएगा काफी जर्नल्स के. अगर नेम से इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट, तो हर एक जर्नल का स्कोप दिया होता है. एज यू क्लिक ऑन द वेबसाइट ऑफ दैट जर्नल, ओपन करते ही उसका होगा स्कोप ऑफ दैट जर्नल. मींस स्कोप मींस किस दायरे में वो लोग पेपर्स को एक्सेप्ट करते हैं. लिखा होगा कि वी एक्सेप्ट रिसर्च पेपर्स रिलेटेड टू मर्डर्स, रिलेटेड टू आईपीसीज, रिलेटेड टू एनी अदर स्पेशल एक्ट्स, लिखा होगा उसके अंदर. तो गो एंड रीड दैट स्कोप. आपको वहां से आइडिया लग जाएगा कि ये जर्नल है मेरे स्पेसिफिक एरिया का है या नहीं है. आई होप वी ऑल आर ऑन द सेम पेज. नाउ अब आपने 50 जर्नल्स कर लिए, उसमें से अपना एरिया सेलेक्ट, अपने 5 जर्नल सेलेक्ट कर लिए. अब उस 5 जर्नल्स में से उनको स्टार्ट रीडिंग पेपर्स फ्रॉम दैट. नाउ स्टार्ट रीडिंग द रिसर्च पेपर्स फ्रॉम द सेलेक्टेड जर्नल एंड एक्सट्रैक्ट at least 15 areas of your interest. लेट अस से मैंने फर्स्ट पेपर रीड किया, वो बोलता है कि मर्डर जो है वो साइलेंट मर्डर्स पे काम करता है, कि मर्डर्स आपने पॉइजन देके किया, वो इस पे बात करता है. मुझे ये एरिया इंटरेस्टिंग लगा, मैंने इसको एक बार लिख लिया है, कॉपी पे जॉट डाउन कर लिया. सेकंड बोलता है कि सर मर्डर्स आपने पॉइजन देके नहीं, आपने गला घोंट के किया, तो ये सेकंड एरिया है, मैंने इसको जॉट डाउन कर लिया. थर्ड बात करता है कि सर मर्डर्स है, आपने यू हैव शूटेड अ पर्सन और आपने उसको मर्डर किया. इंटरेस्टेड एरिया, ये मेरा थर्ड, मैं इसको टॉपिक लिख लूंगा कि दिस कुड बी एन इंटरेस्टेड एरिया. समझ रहे हैं? ऐसे ही मैंने
इनके पिछले 5 साल हर एक जर्नल के एटलीस्ट 5 इयर्स के पेपर्स को देखा, नजर मारी और उनको रीड किया, एंड आई noted down at least 15 topics of my interest. 15 topics of my interest. Again, मैंने आपको कल बताया था, अगर आप एक रिसर्च पेपर को ओपन करते हैं, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट आपको मिलता है, एब्स्ट्रैक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है. See, normal writing is very, very, very different from academic writing. So आपको academic writing आप नए रिसर्च में you are not able to make the meaning out of it. समझ आ रहा है बट आधा समझ आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं बन रहा है पढ़ने में. तो जस्ट कॉपी दैट एब्स्ट्रैक्ट, paste it into ChatGPT. It is an open artificial intelligence tool, and tell him that please convert it into a simple language. And one more thing, you can also translate it into many languages: Hindi, English, Bengali, Telugu, any languages you can convert. You can also convert it into Urdu. Convert it into the language which suits you, जिसमें आपको समझ आए, और उसको मतलब जानने की कोशिश कीजिए कि इस पेपर में कहने का मतलब क्या है. आफ्टर देन सी, ओके, आपने 15 एरियाज को एटलीस्ट सेलेक्ट कर लिया, टॉपिक्स को सेलेक्ट कर लिया कि ये मेरे एरियाज हो सकते हैं. नाउ फाइनल, अब हर एक टॉपिक को पिक कीजिए जो आपके इंटरेस्ट का है, एंड उस पे अपना दिमाग लगाइए कि यस इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. कंपेयर कीजिए, इसमें जाना चाहिए कि इसमें जाना चाहिए. नाउ फाइनलाइज वन इंटरेस्ट एरिया आउट ऑफ दोस 15 सेलेक्टेड एरियाज. अब सर यहां तक की बात तो रही सही, मतलब कि आप समुंदर से निकल के ऐसा मान लो कि नदी में आ गए हैं. पहले पूरा लॉ एक सब्जेक्ट था समुंदर, अभी हम उसको स्पेसिफिक आ गए हैं एक नदी के अंदर, राइट. बट हमें तो पीना है पानी का ग्लास, उसको इतना नैरो डाउन करना पड़ेगा कि हम पानी का ग्लास पी पाए. अभी तो नदी तक आए हैं. फाइन, अभी क्या करना है सर, इससे पहले कि आप इस इंटरेस्टेड एरिया पे अपना रिसर्च पेपर पढ़ना स्टार्ट करें, आई टोल्ड यू यस्टरडे टू मेक एन एक्सेल शीट, और उसमें आपने बहुत सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, हर एक पेपर को ओपन अप करके. बट उससे पहले एक पॉइंट का रह गया था, आई एडिट इट टुडे, कि जो आपने एक एरिया सेलेक्ट किया ये वाला, इसमें प्लीज चेक कि नंबर ऑफ लिटरेचर रिव्यूज अवेलेबल कितने हैं. आई मीन टू से यू नीड टू चेक द नोवेल्टी ऑफ योर टॉपिक. नोवेल्टी मतलब कि कितना नया है, कितना पुराना है आपका टॉपिक. And these are the steps I have mentioned for you to check the novelty of the topic. मैं अपने टॉपिक की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो मेरी पीएचडी थी वो थी मोबाइल बैंकिंग में. ओके, अभी दैट वाज टॉकिंग अबाउट 5 years बैक. आपको चेक करके दिखाता हूँ कि मोबाइल बैंकिंग कितना नया या कितना पुराना टॉपिक है. आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन एंड चेक इट ऑन द गूगल स्कॉलर. I'm sharing my screen, check it in the Google Scholar कि मेरा जो टॉपिक है वो कितना पुराना है. ओके फाइन. I hope Google is visible to all of you. Are you able to see my screen of Google Scholar? Yes, sir. Okay, fine. मैं इन्वर्टेड कोमास क्यों डाल रहा हूँ, बिकॉज आई एम स्पेसिफिकली सर्चिंग कि ये तो सिर्फ ये वर्ड होना चाहिए. इसका मतलब है सर्च ओनली फॉर मोबाइल बैंकिंग. सी, अगर मैं सिंपल मोबाइल बैंकिंग को सर्च करता हूं तो देयर आर हाउ मेनी रिजल्ट्स, 31,30,000. बट आई एम टेलिंग हिम प्लीज सर्च दिस स्पेसिफिक वर्ड ओनली. There are 1,20,000 results. 1,20,000 results. See, इसका मतलब जो मेरा एरिया है इस पे 1,20,000 पेपर्स तो ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं. और अगर मैं शोध गंगा को ओपन करूं, शोध गंगोत्री को ओपन करूं, शोध गंगोत्री एंड शोध गंगा आर दी repositories for PhD thesis and dissertations.
मुझे वहां पे इसकी बहुत सारी थीसिस मिल जाएंगी. सी दिस इज अ वेरी वेरी मच एक्सप्लोर्ड एरिया, बट लेट अस से मैं इसमें और कीवर्ड ऐड करता हूँ अपने. दिस यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. आप जो हम यूपीआई यूज करते हैं मोबाइल पे, गूगल पे, यूपीआई इट फुल फॉर्म इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. नाउ आई एम गिविंग इंस्ट्रक्शन कि सर मोबाइल बैंकिंग भी होना चाहिए, यूपीआई भी होना चाहिए उसके अंदर. They are giving me 678 results for any time. Means सी सर इस पे जो काम है बहुत कम हुआ है. He will show me, see, mobile banking, UPI. He will show me the keywords. Unified payment interface, unified payment interface, unified payment interface, mobile banking. Okay, let me take one other example. Customer stewardship. ये मार्केटिंग का टर्म है, stewardship. सर इस कीवर्ड पे सिर्फ और सिर्फ यू कैन चेक 255 रिजल्ट्स आर ओनली देयर. अभी तो मैंने सिर्फ एक वर्ड चेक किया. आई कैन चेक इट कि इंडिया में कितनी स्टडीज हुई हैं. 77 स्टडीज. अभी यहाँ पे मैंने आपको सब सिखाया कि हाउ टू सर्च इफेक्टिवली. अगर आप डायरेक्टली इसको सर्च करते तो यू विल बी गेटिंग, आपको कितना रिजल्ट्स मिलता है इसका 1,68,000. और आपको लगता है कि यार ये टॉपिक तो बहुत ज्यादा यूज्ड है. यस यूज्ड है, बट यू हैव टू चेक द एरिया. अगर मैं इसको लेटेस्ट से रिलीजन के साथ लिंक कर दूं, देयर आर ओनली 24 रिजल्ट्स सर, only 24 results. So when out of the 15 you select your area, please type your keywords here. Please type your keywords here and check the novelty of that topic. अभी मैं मोबाइल बैंकिंग डालता हूं फिर से. लेटर से मैंने मोबाइल बैंकिंग को फिक्स किया. कितना रिजल्ट है 1,20,000. दिस इज द स्पेसिफिक वर्ड. लेटर से आप कोई लॉ का वर्ड बोलिए, क्रिमिनल लॉ. 12,20,000. कितना ज्यादा यूज टॉपिक है ये. बट क्रिमिनल लॉ को आपको लिंक करना पड़ेगा. लेट अस से आई एम लिंकिंग इट विद सुसाइड. अभी भी ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोर्ड एरिया है. तो जब सी अब आप मुझे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर इज देयर एनी स्पेसिफिक नंबर कि इतने पेपर हो तो मतलब अनएक्सप्लोर्ड एरिया और इतने पेपर तो एक्सप्लोर्ड एरिया है. ऐसा जरूरी नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन. इट डिपेंड्स अपॉन डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन. अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि लेटर से मैं रिलीजन की बात कर रहा हूं, तो रिलीजन एक ऐसा एरिया है जिसपे ज्यादा स्टडीज नहीं होती हैं. रिलीजन को अगर मैं लिंक करूंगा किसी और चीज के, लेटर से आई एम लिंकिंग विद स्पिरिचुअलिटी. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल्स कि आप कैसे कैसे चेक कर सकते हैं. सी ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोर्ड एरिया है, मुझे समझ आ रहा है. बट अगर मैं इसको मोबाइल बैंकिंग के साथ लिंक कर दूं, मे बी इस कॉन्टेक्स्ट में इसकी सर्च ना हुई हो. सी रिलीजन स्पिरिचुअलिटी पे वी आर गेटिंग 30 लाख रिजल्ट्स. बट इफ आई लिंक इट विद मोबाइल बैंकिंग, मैंने कॉन्टेक्स्ट ही बदल दिया ना, तो कितना रिजल्ट्स आ रहा है वो 324 रिजल्ट्स. जस्ट 324 रिजल्ट्स. सो अगर आप 324 रिजल्ट्स है मींस आपका एरिया है दैट इज वेरी वेरी लेस एक्सप्लोर्ड. और आपको इतने पेपर मिल रहे हैं. अगर यहाँ पे आते 25 पेपर्स, 30 पेपर्स, 40 पेपर्स, सी इट्स अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डाउट कि रेलेवेंट लिटरेचर अवेलेबल नहीं है सर. सी फॉर राइटिंग अ रिसर्च पेपर अगर आपका इतना रिजल्ट्स भी आता है 50-60, इट इज फाइन, इट इज ग्रेट. But for writing a synopsis, for writing a dissertation, for writing a research proposal, वहीं पे गाइड बना कर देगा कि सर इस पे रेलेवेंट लिटरेचर ही नहीं है. यू डोंट हैव दैट मच लिटरेचर कि आप सिर्फ थीसिस को लिख सको. दे विल कैंसल आउट योर टॉपिक. बट यस फॉर राइटिंग रिसर्च पेपर्स द गुड जर्नल्स डिमांड्स कि आपका पेपर जो है वो नोवेल हो. इट शुड बी नोवेल. फाइन. सो इसीलिए at this point of time, after selecting one final topic out of the 15, you have to search for the novelty of your topic. कि वो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो. अगर पिज्जा बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो अगेन वो वेस्ट जाएगा, आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा उसमें से, रिसर्च में से. आप मैंने आई हैव सीन मेनी पीपल
कि जिनका एक टॉपिक था वो बहुत पुराना था and they have left out their PhDs, या फिर इतना ज्यादा ब्रॉड था कि वो काम को मैनेज ही नहीं कर पाए। सी पीएचडी में व्हाट हैपेंस कि आप एक चीज के पीछे जाते हो ना, दूसरी चीज निकल के आती है, तीसरी चीज निकल के आती है, फिर आप उसके पीछे चले जाते हो। यू गेट कंफ्यूज कि यार हो क्या रहा है, आई एम नॉट एबल टू मैनेज माई वर्क। इसीलिए अगर ज्यादा ब्रॉड रखोगे तो आप मैनेज बिल्कुल नहीं कर पाओगे, यू विल लूज योर इंटरेस्ट इन पीएचडी एंड यू विल डेफिनेटली लीव योर पीएचडी, या फिर बहुत मुश्किल से करोगे उसको। अगर बहुत छोटा एरिया होगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो मेक श्योर कि ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड भी ना हो और ज्यादा एक्सप्लोर्ड भी ना हो, मीडियम हो। आपको आप एटलीस्ट जब कंक्लूजन दोगे, अपना रिजल्ट्स दोगे, डिस्कशंस दोगे, उसको सपोर्ट करने के लिए यू नीड योर लिटरेचर। तो इतना रेलेवेंट लिटरेचर हो कि आपको सपोर्ट कर सकते हैं, इतना हो। So this is a very important point which we missed yesterday. I'm again getting back to my slides. So yeah, now you know how to check the novelty of a research. Open Google Scholar, type, मैंने कल बताया था कि Excel में सर keywords को नोट डाउन करना है। So अभी तो हमने Excel बनाई नहीं है, out of the 15 you selected that one topic, उसमें से जो उस पेपर में keywords दिए होंगे आपको उसके related papers में से, उन keywords को you need to search in that Google Scholar using smart search as we discussed in the previous classes. Now check the number of research papers available on that topic. Check how many titles that paper have the search keywords. See sir, एक और पॉइंट है इस चीज को जानने का कि आपका जो पेपर है वो ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है या ज्यादा एक्सप्लोर्ड है उस चीज के लिए। सी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे टाइप किया मोबाइल बैंकिंग and what is happening here? सर मेरा कीवर्ड पेपर के टाइटल में ही आ रहा है, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, सभी के टाइटल में ही आ रहा है। दिस इज अगेन वन ऑफ द इंडिकेशन कि आपका पेपर है बहुत ज्यादा एक्सप्लोर्ड है। सर टाइटल में ही नाम आ रहा है, मोबाइल बैंकिंग, अगेन टाइटल में आ रहा है, अगेन टाइटल में आ रहा है, अगेन टाइटल में ही नाम आ रहा है। इसका मतलब है सभी टाइटल्स में नाम आ रहा है। देखिए मतलब ये कि आपका जो एरिया है दैट इज टू मच वेल एक्सप्लोर्ड, प्लीज डोंट गो फॉर दैट टॉपिक। ओके, लेट मी सर्च समथिंग न्यू हियर, समथिंग न्यू हियर। वी आर सर्चिंग फॉर कस्टमर स्टीवर्डशिप। अगेन कस्टमर स्टीवर्डशिप, कस्टमर स्टीवर्डशिप, कस्टमर स्टीवर्डशिप। सिर्फ कस्टमर स्टीवर्डशिप इज वेरी मच एक्सप्लोर्ड। मतलब आप इसको अकेले नहीं ले सकते हो, यू हैव टू लिंक इट विद द सब्जेक्ट जो एक नया हो, लाइक रिलीजियसिटी, लाइक कस्टमर स्टीवर्डशिप को आप कंपनी के बिहेवियर में मत लीजिए, किसी और कॉन्टेक्स्ट में लीजिए। लेट अस से आप कस्टमर बिहेवियर को टीचर्स के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। let's say oh my god, there are just 25 results, just 25 results in the context of teachers. So you can go to the literature, check it out कि हाँ ये अच्छे पेपर्स हैं कि नहीं है। अच्छे पेपर्स कैसे पता लगेंगे? सी एमरोल्ड में है, गुड पेपर, स्प्रिंजर में है, गुड पेपर, टेलर एंड फ्रांसिस में है। समझ पा रहे हैं? आपको पेपर ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट विद द नेम ऑफ द पब्लिशर यू विल गेट टू नो कि यार पेपर अच्छा है कि नहीं है। एंड सी हियर कि एमरोल्ड में है, दिस इज द जर्नल नेम, यूरोपियन बिजनेस। यू कैन कॉपी दिस नेम, go to ABDC list, check in the ABDC list, if it's in the ABDC list मतलब ये तो डेफिनेटली अच्छा पेपर है। सी एमरोल्ड के भी, इन अच्छे पब्लिशर्स के भी सभी पेपर ABDC में नहीं होते हैं, कुछ पेपर्स होते हैं। मतलब काफी हद तक 70-80% पेपर्स दे हैव इन द ABDC लिस्ट, बस सभी पेपर्स ABDC में नहीं होते हैं। तो अगेन आप चेक कर सकते हैं कि एमरोल्ड का ये पर्टिकुलर पेपर ABDC में है कि नहीं है। अगेन टोल्ड यू पर्टिकुलरली टू रीड फॉर ABDC पेपर्स। अगर नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल एमरोल्ड के भी रीड कर सकते हैं। सी एल्जेवियर, दिस आई डोंट नो ये कैसा पेपर है, लाइब्रेरी आर्काइव्स canada.ca, आई डोंट नो, मुझे क्वालिटी का नहीं पता, आई कैन नॉट मेक क्वालिटी। books.google.com, डोंट गो फॉर सच काइंड ऑफ पेपर। Sage Hub, you can go for Sage, that is fine. MDPI, don't go for this paper. Books.google, don't, this is a book, you can read the book if you wish to. Academia, don't go for this paper. See, from the title we can just make a decision whether to read this paper or not. So again I am going back to my slides.
Is my slide visible to you? Yes. Yes, sir. Thank you. Thank you. So this is again one of the point how you can check your novelty. Check the quality of research papers available using the name of publishers and journals names, as just recently we have discussed. So this is the process you can follow step by step to check whether your research topic is new, is old, is very new. You can go for it or you should not go for it. Brajendra sir, okay, just let me know, have you checked these items before going for your topic? As you are telling it was too much wide. So have you checked these steps before selecting your topic? No, sir. Never. Okay, sir. Okay, sir. So, sir, from now, you got a point that how to go for a topic and for which topic you should not go, right? Yes, sir. सर पिज्जा आपने भी बड़ा रख लिया अपनी प्लेट में. Just narrow down its scope. We will discuss later the research methodology part. There we will discuss how you can narrow down your scope, how you can broaden your scope of the study. Okay, sir. Next point. सर मेरा एक सवाल था. Yes, sir. Please, sir. Please ask. Sir. सर ज्यादा नैरो डाउन होने से क्या रिसर्च प्रॉब्लम होगा रिसर्च पेपर लिखने में? Definitely, sir. Sir, see, problem कहाँ होगा? I will let you know. You will write the introduction part. Introduction आपको normally मिल जाएगा, Google पे मिल जाएगा. The main problem you will face while writing the literature, because अच्छे paper में for writing the literature you need the support of papers, good papers, quality papers. And दूसरा problem कहाँ पे आएगा? While you will interpret your discussions at that point and writing implications, you need the results of previous papers which are good papers to support your results of the study. At that point of time you will face the problem. लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि मान लीजिए मैंने जिस प्रॉब्लम को फाइंड किया है वो उसमें शायद किसी ने काम नहीं किया हो, वो भी तो सकता है सर. See, sir, in that terms, you are going for the real research. It will take 3 to 4 to 5 years. I am frankly speaking, my one of the economics teacher in Chitkara University, Dr. Namrata Sandhu. Now she has moved to USA. And I had a talk with her. She told me, see, here people invest 10 years, 15 years, 20 years, the longitudinal researches. They do the longitudinal researches. And there, these longitudinal researches are exploratory in research, in nature. Means we explore something new. Like you said, कि वो किसी ने explore ही ना किया हो. That is fine. But means that your research is exploratory in nature and it takes time to explore something new. Then one of the options for you is to go for longitudinal research. So longitudinal research means it takes 3 to 4 to 5 years. You are noticing the behaviors of the same sample size and then exploring something new. But if you are thinking from the point of just writing a research paper and that too in a good quality journal, you need a literature base, sir. You need a literature base. So thank you. Okay, sir. Thank you, sir. So now here we get back to our points that after selecting one area after the 15 one, please check the novelty of your research as we have just now discussed. Once you are sure that आपका टॉपिक ज्यादा पुराना नहीं है, ज्यादा नया नहीं है, लिटरेचर ठीक अवेलेबल है, now start preparing your Excel. See, make sure your literature must not be too less, specifically for the purpose of thesis or synopsis. See, directly teachers or your guide will say no to that topic. You will not get admission into that university or synopsis. If you write a synopsis, you will waste your time on that. And not too much broad. Okay. Now start reading papers on that particular area. Now you know it's novel.
Now start reading papers. Tomorrow we will discuss how to read a research paper, and start preparing an Excel sheet. See, I have write down the points which you need to make in that Excel sheet. Year of that paper, country of that paper, name of the paper, research problem, research question, what they have given, their limitations, their future scope, and the keywords. Write down these points in the Excel sheet. Now read at least 20 research papers for making a research proposal, for taking admissions into universities, into PhD, and at least 40 papers for writing a quality paper or for writing a synopsis. At least, I'm telling again, at least, these are at least. You can read as much as you can, 50, 60, 70, 80, as much. The more you read, the more clarity you will get on the concepts. But at least 40 papers you need to read for writing a quality synopsis or writing a quality research paper. Then apply your mind again. Yesterday we discussed, apply your mind to those research questions, to those research limitations, to those future scopes of the research papers, and try to make your own point of view. See, sir, मोबाइल है आपके पास, अगर खाली मोबाइल पड़ा है तो मृत समान है, इट्स डेड. आप उसको सकते हैं, यू स्टार्ट यूजिंग इट, तो उसमें जान आती है. इन द सेम वे आप एक्सेल शीट बना लेंगे. मैंने आपको अगेन एग्जांपल दिया था, आई मेक 70 LRs, बट दे वर लाइक डेड unless and otherwise you start applying your mind on it. See, again, research, sir, पक्की पकाई खीर तो नहीं है. अगर मैं खीर आपको दे भी दूंगा, you have to pick your spoon, take the sweet, put it in your mouth to digest it. इतना काम तो आपको करना पड़ेगा. I am giving you steps how to make it. Still, if you want कि आपको कोई बना बना रिसर्च क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन दे भी देगा, you will not able to write it properly because आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आई सर, आपको बेस ही नहीं पता लगा किस बारे में बात चल रही है. I have seen many students कि they have written down their research papers, they have written down their research synopsis, they have written down their research proposals. Although, sir, ऐसे बच्चे who are done with their PhD, I am again saying done with their PhD, उनको नहीं पता होता कि मैंने क्या किया. Really, उनको आप जाके पूछो कि what you have done in your PhD, they don't know. They will ask, so मैंने तो कर लिया, I don't know. ज़्यादा मत पूछो मुझसे. So see, that was the problem because they have not done the literature review. That is a major problem. So please, 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 ये सर बेस है. अगर जितना बीज अच्छा होगा पेड़ का, जितना पानी अच्छा मिलेगा, उतना जो पेड़ है ना वो ऊपर जाएगा. Let me share you a story of Chinese bamboo. Chinese bamboo. Might be some of you have heard about this one, but let me share it again. Sir, normal bamboo जो है ना, वो 2 साल में इतनी लेंथ पकड़ता है. जैसे आप बीज लगाते हो, आपने बीज लगा दिया, 1 महीने बाद उसका आपको फ्रूट देना शुरू हो जाएगा. धीरे 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 करते करते 2 साल में वो इतना बड़ा हो जाएगा. सेम वे कंपैरिजन में आपने चाइनीज बैम्बू का सीड लगाया, आपने देखा 1 महीने में साफ कुछ भी नहीं आया, 2 महीने में साफ कुछ भी नहीं आया, 1 साल में साफ कुछ भी नहीं आया, 3 साल में सर कुछ भी नहीं आया, बीज का बीज वही है. आपको लगता है बीज खराब तो नहीं हो गया सर. 4 साल में कुछ भी नहीं आया, 5 साल होने वाले हैं, 3 महीने रह गए हैं, वो 3 महीने में सर वो इतना बड़ा हो जाएगा. These are the largest bamboos in the world. सर वो इतना बड़ा हो जाएगा in that just 3 months. Reason being, वो 5 साल जो है ना वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था ताकि मैं इतना ऊपर जा सकूं कि मुझे कोई आंधी कोई तूफान गिरा ना पाए. बट जहाँ पे ये नॉर्मल बैम्बू था, ये सिर्फ यहाँ तक जड़ें करके और ऊपर खड़ा हो गया सर. Again, in the research, LR is your base, same like that Chinese bamboo. जितना अच्छा LR होगा, जितना ज़्यादा अच्छा LR होगा, उतने ज़्यादा quality research papers you will be able to write. After that, interlink the variables of one paper with the variables of the other paper.
See, एक पेपर को पढ़ा, you read the second paper, third paper, now interlink the ideas. Try to interlink the ideas. Definitely you will get not one, you will get many research problems. आप एक क्वेश्चन तो क्या बात करते हो, आपको 5 रिसर्च क्वेश्चन मिल जाएंगे उसी लिटरेचर में से, उसी 20 पेपर्स में से. बट मेक श्योर कि वो 20 पेपर, वो 40 पेपर यू हैव रेड इट इन अ गुड मैनर. Tomorrow we will discuss how to read a research papers and that too in short span of time. But आज आपको बेस क्लियर करना जरूरी है कि एक रिसर्च क्वेश्चन कैसा होना चाहिए. Now, okay, for the law students, these are some literature review sources. I have jotted down. I have talked to many professors. I have talked to many research scholars. After then, I have get this list for you guys. Sir, ये कुछ literature review के sources हैं, like for judgments of Supreme and High Courts. These are the hyperlinks, sir. You don't need to do anything. Just click on this. You will get to this site. India Kanun for law cases, legal bites for law articles, NRCB for secondary data, sir. कि कितने deaths हुए हैं, कितने suicides हुए हैं. This is a government website for secondary data. You can use this one. National Crime Report Bureau. Manuputra, SCC online for Supreme Court cases and Law Commission reports. See, these are some of the links I have tried to jot down for you guys so that you can get all in one workshop. You can use these links while doing the literature review. Now, sir, आपने literature review कर लिया, आपने 15 टॉपिक्स सेलेक्ट कर लिए, आपने उनमें से एक टॉपिक भी सेलेक्ट कर लिया, आपने नोवेल्टी भी चेक कर ली, आपने एक्सेल शीट भी बना ली और आपने इंटरलिंक भी कर लिया आपस में रिसर्चर्स को. नाउ आपके पास आइडिया आ गया कि यार ये तो रिसर्च प्रॉब्लम है. दिस इज द रिसर्च प्रॉब्लम आई फाइंड आउट. देयर इज वन चैट. ओके, दिस इज द रिसर्च प्रॉब्लम आई फाइंड आउट. सी, हमने सर यहाँ से हमने स्टार्ट की जर्नी अपनी और हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं अभी. नाउ सर, अब ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम का जो टॉपिक है हमारा खत्म हो जाएगा. हाउ टू फ्रेम अ रिसर्च क्वेश्चन. सी, आपने पिज्जा खाया, हमने पिज्जा ऑर्डर किया था, पिज्जा खाया. लेट्स से आपने चीज पिज्जा ऑर्डर किया और चीज पिज्जा में चीज ही नहीं है. आपने चीज पिज्जा ऑर्डर किया, उसमें चीज ही मिसिंग था. अब क्या बोलेंगे उनको? प्लीज लेट मी नो, अब क्या बोलेंगे उनको? Shubham sir, this is your first class. You go to website, all the recordings are available there. At the last of the class, you can ask this question. Okay? Yes sir. So आप लोग, हमने पिज्जा ऑर्डर किया था and पिज्जा में लेट्स से चीज पिज्जा ऑर्डर किया and there is no pizza in that cheese. आप लोग क्या बोलेंगे? Please give me your reviews. आप उस डोमिनोज वाले को क्या बोलेंगे? I'll ask for my money back, sir. उससे पहले भी तो कुछ बोलेंगे ना सर. ये क्या पिज्जा दिया है? ये क्या पिज्जा दिया है? चीज पिज्जा की चीज ही नहीं है इसमें. या तो नया लेके आओ, मुझे पैसे वापस चाहिए. और कुछ गालियां भी सुनाओगे डेफिनेटली. अभी देखो, तो सोसाइटी में बैठे हैं तो हम बोल ही रहे हैं कि आई विल आस्क फॉर द मनी बैग. यू विल नॉट जस्ट आस्क फॉर द मनी बैग. अभी मन में 4 बार बोलोगे कि मैं इतने शौक से पिज्जा खाने आया था, है ना. उसके बाद उसको 4 गालियां मन में सुनाओगे, 4 शायद मुंह पे सुनाओगे. उसके बाद बोलोगे, फिर भी अगर वो दोबारा पिज्जा ले आए एंड दैट टू अगेन विदाउट एनी चीज, आप उठ जाएंगे एंड टेल हिम दैट गिव मी माय मनी बैक. राइट? In the same way, you have done all the work, but you don't know how to frame a research question. आपने उसमें variables ही छोड़ दिए, आपने उसमें scope ही छोड़ दिया. Brajinder sir, you are asking the scope. You have taken a very broad scope because your research question was not specific. So there are many characteristics जो एक research question में होनी ही चाहिए. नहीं तो वैसा ही होगा जैसे चीज के बिना पिज्जा, वैसे ही आपका रिसर्च क्वेश्चन बिना विदाउट दोज मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स. लेट मी शेयर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विद यू. फाइन. फर्स्ट वन इज रेलेवेंस. पॉइंट्स टू कंसीडर व्हाइल फ्रेमिंग द रिसर्च क्वेश्चन. फर्स्ट इज रेलेवेंस. योर रिसर्च क्वेश्चन शुड बी रेलेवेंट टू द
current issues and concerns in your discipline. See, ये हमें कैसे पता लगेगा? अगर हमने LR अच्छा किया होगा, अगर LR हमने पहली novelty चेक कर ली होगी उसकी. If we have already checked the novelty of that topic, then definitely it will be relevant to the current issue. आज के टाइम में उसका यूजफुल होना चाहिए आपके रिसर्च क्वेश्चन का. रिसर्च क्वेश्चन मतलब जो उससे आंसर निकल के आएगा सर, जो उससे आंसर निकल के आएगा, जो उसका इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे, दैट मस्ट बी इन द that must add to the current problem in the society. Second, scope. Make sure that a research question is not too broad. Again, पूरे समुंदर एक पूरा बड़ा पिज्जा नहीं होना चाहिए कि वो वेस्ट जाए, and not too narrow in scope. इतना कम भी ना हो कि आप भूखे रह जाए. See what will happen. Why it is so कि broad और narrow क्यों होना चाहिए? A research question that is too broad may be difficult to answer. Again, may be difficult to answer. While a question that is too narrow may not provide enough information to draw meaningful conclusions. See, जो बड़ा होगा आप उसको solve ही नहीं कर पाएंगे because it is that much broad. और जो narrow है सर, उसकी जो implications होंगी वो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल नहीं होंगी बिकॉज आप जनरलाइज नहीं कर पाएंगे उनकी इम्प्लीकेशंस को. जनरलाइज का मतलब होता है कि लेट अस से मैंने कुछ चीज पंजाब के अंदर फाइंड आउट करी एंड आई कैन से कि हाँ ये चीज ऑल ओवर इंडिया भी एप्लीकेबल होगी. दैट इज नॉट अ जनरलाइज कर देना, जनरल पब्लिक को भी एक्सेप्टेबल कर देना. अगर आपकी रिसर्च प्रोग्राम बहुत नैरो डाउन होगी, आप जनरलाइज नहीं कर पाएंगे उस चीज को, या फिर यू मे नॉट प्रोवाइड इनफ इंफॉर्मेशन टू ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन. आपको कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा. Measurability. Consider how you will measure and evaluate the outcomes of a research. मतलब कि सर डेटा है भी या नहीं है उसके ऊपर. I will take real life example on this. Just let me go through this slide. After the slide, we will take real life example कि how it should be measurable, how it should be relevant. So means सर you need to check इस पे डाटा है कि नहीं ताकि आप उसको उस रिसर्च क्वेश्चन को आंसर कर पाओ. Feasibility. Consider whether a research question is feasible. Feasible मतलब क्या होता है कि हाँ सर उसको कर सकते हैं. In terms of feasible मतलब औकात में है. In terms of time, in terms of resources, in terms of accessibility of data. ऐसा ना हो कि हम PhD में एंटर किए and we have taken a research problem जो कि आंसर ही 10 साल में होगी. Means it is not feasible as per your time. Let us say resources. मुझे resources चाहिए, मुझे जो data sets चाहिए वो available ही नहीं है. Sorry, it is not feasible for you. Narrow down your research. और accessibility of data. सब data तो है, but it is private. वो government का data and they don't share with me. Sorry, sir, your research problem is not feasible. We will share examples. We will share examples on this. And background of the research. Conducting a background research is essential to ensure that your research question has not already been answered. Sir, again, ये कहाँ पे हमारा define हो जाएगा? When we check the novelty of a topic, वहाँ पे sure हो जाएगा कि सर हमारा research question है, पहले आंसर तो नहीं हो गया कहीं, पहले तो नहीं आंसर हो गया कहीं ये वाला research question. अगर हो गया तो फिर आपका क्या फायदा है? Sorry, आपका टॉपिक किसी काम का नहीं रह जाएगा. That is why make sure your research question has not been answered in the same context. Now, I will take some examples. See, research problem framing must be clear. Research question must be clear. Let's take some examples. जब मैं कहता हूं कि research question और problem must be clear, इसका मतलब क्या है? What a clear research question includes. Let's see कि एक अच्छे पिज्जा में क्या क्या होना चाहिए. कि सर ऑलिव्स होने चाहिए, कि सर बेस उसका पतला होना चाहिए, कि सर अच्छे से बेक्ड होना चाहिए, सर उसके ऊपर चीज ही अलग से लगाना चाहिए, सर वो जो ऊपर वाला चीज है वो स्ट्रेचेबल होना चाहिए, राइट, वो सॉफ्ट भी होना चाहिए. These are the characteristics of a good pizza. But now, what is clear research question includes? The first thing is specificity. Specific होता है सर, ये देखो ये है broad और ये है specific. ये है specific. तो
It defines the specific topic of the study. वो specific होना चाहिए. Dependent variables vary करते हैं discipline to discipline. Majorly dependent independent variables जो है वो social sciences में आते हैं, like let's commerce में आते हैं, management में आते हैं, law में भी आ जाते हैं. It depends आप किस type की research कर रहे हैं. So your research question, it identifies the dependent variables being studied. Sir, ये अभी आपको बताऊंगा कि variable क्या होता है और फिर dependent क्या. You must have heard of the word dependent variable, independent variable, but let me tell you first what is a variable. Okay, any of you tell me what is a variable? What does it mean? See, मैंने फिर से कहा था कोई भी आंसर या कोई भी क्वेश्चन गलत या सही नहीं होता है, उसको सही गाइडेंस होनी चाहिए. आपको अभी तक जो लगता है कि वेरिएबल क्या होता है, प्लीज शेयर योर थॉट्स विद मी सो दैट वो सही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो we will... Variable in the Yes ma'am. variable in the mathematics, there is change of order. Change of order. Okay ma'am. Anyone else? Thank you. Change ma'am, of for that. order means there is some dependent and independent variables. So that is a part again. Variable is of two types, dependent and independent. I'm just talking about the variable. So that's not same every time. It's changing their Changing of order. position as depends upon the equation. It depends on the situation. Okay ma'am. Okay. I don't know how to explain, but That's fine. I got your point, ma'am. I got your point. Anyone else? What is a variable? Okay. Let me again. मेरी बात को आप याद रखिए. I told you जब भी कोई एक नए. Yes, Madhuri. Variables means, sir, we can find different things in different journals. Ma'am, can you give an example? Sir, like if you are taking age also equals as variable, but it is changing. Your income, your age. Just give a second. Let's Madhuri. Yes, Madhuri. Examples, I'm not able to get. Okay, just strike me your eyes, sir. Ekdam strike me your examples. Variable. Okay, sorry, sir. That's fine, ma'am. That's fine. Okay. Now ask me. Let me ask you one other question. Don't just leave the aspect of mathematics, leave the aspect of statistics, leave it. What is variable in simple English? Variable is the assumption, and it is measurable. Like infinity also measurable in the way of that particular. Leave statistics. What I'm kind of again you are saying leave taking statistics. that Leave variable. statistics. Ma'am, forget about measure. Okay, in general, I am also telling Yes, you in general. assumption. Assume. When you are saying lot of time, let us assume. Lot of time you pronounce that word. It means you are talking about that variable. Okay. Okay, fine, ma'am. Thank you guys for making a try. See, I'm sharing my screen. Again, get back to my learning. Remind my learning. I told you, whenever you see a new word in front of you, just break it out. You will get the meaning of it. See, variable. Very. Very. Very means which keeps on changing. There are two things. One is constant. One is vary. Right? Your heartbeat, it's varying. Per second, it's varying. But let me tell you, your bed on which you sleep, it's constant. It's not moving. Or we can say, sun, it's constant.
and earth is revolving around sun. So means it's varying, it's changing. So variable means anything whose behavior is to change. Anything which will change is called as a variable, and anything which will not change is called as a constant. Right? Now there are two types of variables. Now let us get into the types. One is dependent variable. Okay, we are not discussing the term dependent variable. Let's talk about dependent. What is the meaning of dependent? You tell me. Students are the dependent variable. Yes, let us say I am taking money from my parents. I am saying, yeah, my parents be dependent too. I am dependent on my parents. And let us say I am doing my own job. Now I can say, sorry, for financially purpose, I am not dependent on my parents. I am independent. Means there is no external force which is affecting me. It's my job and I'm earning my income. No interference of the parents. But let's say I am not a working one. I am taking money from the parents. So I become dependent on my parents. Right? In the same way, sir, let me clear the slides. So, sir, variable means which is varying. We discussed there are two types. One is dependent variable, one is independent variable. Now, what is this? Dependent variable means there is something on which can change the results. Means my parents are there, which are impacting me, impacting my earnings. And let us say independent means I am independent. आजकल culture बहुत चला है कि girls want to become independent, boys want to become independent. Means they don't want any interference. Means independent means उनके ऊपर किसी भी चीज का दबाव नहीं है. They are independent. So independent variables means जिसके ऊपर किसी भी चीज का दबाव नहीं है, सबसे ऊपर वही है. And dependent means जिसके ऊपर किसी भी चीज का दबाव है, किसी भी चीज का दबाव है. Let us say now you ma'am given you example. There is some restrictions. Sorry ma'am. There is some restrictions for the dependent variable. I'm not going the technical terms. We will come to it, but let's understand it in the simple words. Let's not discuss it technically. So means you have given me example कि there is a teacher and student. Teacher and student. Now, teacher is teaching the subject, student is learning the subject. Now, teacher, it's the wish of teacher what he wants to teach. So, इसके ऊपर किसी भी चीज का दबाव नहीं है. He is independent. And student, yes, जो teacher सिखाएगा, what the teacher will teach, student will learn. Means, see, इसकी knowledge dependent है किसके ऊपर? On teacher. So, इसके ऊपर दबाव है किसका? Teacher का. So, here it is a dependent and yes, it is changing. So, it is variable. It is independent and yes, it is changing. It is variable. So, independent variable, dependent variable. This was in the normal basic sense. Now, but where we get to a back point, a research question must include, identifies the dependent variable being studied. कि सर उसमें आपको बताना होगा कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल क्या पढ़ने वाले हो. And the context of the study, it identifies the context of the study. I am taking some example with you so that you can get clarity on what I am talking about. What is specificity? What is dependent variables? What is study context? I am just taking an example here. See, first I am framed an unclear research question. We are discussing here on it must be clear. So let's discuss what is not clear. I am discussing an unclear research question. This is a research question. How do fruits and vegetables affect health? How do fruits? आपने papers निकाले and उसमें से आपने research question निकाला कि सर इस पे स्टडी नहीं हुई है कि fruits vegetables health पे कैसे affect करते हैं. आपने general में ये question बना दिया कि how do fruits and vegetables affect health. Now here you forgot these three things: specificity, dependent variables, and context.
See, no, this research question is not specific. Why? It is too broad and lacks specificity. It does not clearly identify the specific fruits and vegetables being studied. उसने नहीं बताया कि sir fruits and vegetables कैसे? See, it is too broad. Here we have taken fruits and vegetables means all types of fruits and vegetables. But if here we can use organic or otherwise. See, if we types here organic fruits means हमने अपनी स्टडी के स्कोप को छोटा कर लिया, हमने अपनी स्टडी के कॉन्टेक्स्ट को छोटा कर लिया. अभी हम यहाँ पे पूरा समुंदर नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हमने उसको ऑर्गेनिक यहाँ बोल के एक नदी पे नैरो डाउन कर दिया. So make sure it should not be too much broad. Rajendra sir, please make this point noted कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको नैरो डाउन करना पड़ेगा उसको. Second point, I told that dependent variables must be there. Dependent variable is unclear. See, it is telling me how the vegetables affect health. See, here it is clear. Here it is clear that yes, fruits and vegetables are affecting the health. Now you tell me, health is a dependent variable or an independent variable? Health is dependent on something or it is independent? I want to ask answer from you, from your side. Dependent. सर Dependent. Yes, sir. Rajendra sir, please say. डिपेंडेंट सर. Why dependent, sir? Why, sir? Give me the reason, sir. क्योंकि सर हमारे शरीर मान लीजिए कि बहुत सारे चीजों के ऊपर निर्भर करता है ना, खाने मतलब बिल्कुल सर, एक्सेट्रा. बिल्कुल सर. जो खाएंगे उसी पे तो हेल्थ अच्छा होगा ना. अगर हम अच्छा देसी की खाएंगे तो we will have good health. If we eat fast food, then we will have bad health. Dependent हुआ ना. तो ये तो आपने सही डिफाइन किया कि दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हेल्थ बदलती रहती है, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ सी, हमने सिर्फ हेल्थ की बात करी है सर, ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है. सी, इट डज नॉट क्लियरली आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट वेरिएबल्स बीइंग स्टडीड. सर हेल्थ कैसी? वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ हेल्थ. वी हैव फिजिकल हेल्थ, वी हैव मेंटल हेल्थ, और भी बहुत तरह की हेल्थ होती है. किस तरह की हेल्थ को आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे? यू हैव नॉट डिफाइंड. This is too broad and not feasible for you. You should given which kind of health here you are talking about. Physical health, mental health, or any type of health, spiritual health, right? And we are talking about the study context. See here, it misses the context. Sir, इसने बात किया vegetables, fruits and health की, but it misses कि sir आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी, कौन सा context? So here this is the solution, how to make it clear. Now this is one more research question. What is the impact of organic farming practices? See sir, कितना specific है organic farming practices on the physical health. Sir और specific कर दिया, physical health benefits of medicinal plants used in Ayurveda. सर कितना स्पेसिफिक और कितना क्लियर रिसर्च क्वेश्चन है, मजा आ गया पढ़ के. अभी आप दोनों को कंपेयर कीजिए एक बार, ऊपर वाले को और नीचे वाले को. हाउ डू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अफेक्ट हेल्थ? पूरी नदी है सर ये. एंड ये सर दिस इज अ ग्लास विच वी आर टॉकिंग अबाउट, जो हमको पानी पीना है. कितने सर एक कुआं है जो वो आपकी प्यास बुझा सकता है, और समुंदर जितना मर्जी बड़ा हो आपकी प्यास नहीं बुझा सकता, क्योंकि पानी खा रहा है. कुएं का पानी मीठा है सर. समुंदर लेंगे तो सर सॉरी आई एम टेलिंग यू, यू कैन नॉट राइट रिसर्च. लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे. पानी पी नहीं सकते हैं, आपको उसको नैरो डाउन इस लेवल तक करना पड़ेगा. मैं आपके लिए एक और एग्जांपल लेके आया हूं सर. वन मोर एग्जांपल, दोबारा एक और एग्जांपल करेंगे. लेट्स सी कि कैसे फ्रेम करना है. एग्जांपल ऑफ अ क्लियर रिसर्च क्वेश्चन. सर ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये वाला, ये कैसे स्पेसिफिक है? लेट्स चेक इट. How do organic farming practices affect the nutrition content of fresh fruits? See sir, यहाँ पे ये भी लिख दे कि fresh fruits and vegetables बहुत टाइप के हो सकते हैं. बासी भी हो सकते हैं, जिसको हम स्टेल कहते हैं. फ्रेश भी हो सकते हैं,
Here I am that much specific कि मैं fresh भी बात कर रहा हूँ इसमें. In the food industry, sir, let's check how it is a good research question. Specificity, उसने specific किया कि organic farming practices पे कर रहे हैं हम काम. How do organic farming practices? उसका dependent variable था nutritional content of the fresh fruits and vegetables. Nutrition content of the fresh fruits and vegetables. Right, sir? And study context क्या था? In the food industry. In the food industry. तीनों चीजें इसमें थी. That is why this is a very clear research problem. Okay, sir. एक और point. हमने बात की थी अभी कि it should be feasible. See, it should be feasible. Let's do it with an example. It must be feasible. Okay, feasible का मतलब क्या होता है सर? सबसे पहले तो ये चेक करेंगे feasible का मतलब क्या होता है. What does a feasible research question includes? First thing, it must be practical. मतलब not vague. हवा में बातें नहीं करनी है सर. ऐसा कर देंगे, वैसे चांद तोड़ के ले आएंगे, तारे तोड़ के ले आएंगे. Practical होना चाहिए. We will take example of this one. It should be testable. It must be possible to test this problem empirically. अगर आप empirical paper लिख रहे हैं तो empirically, अगर वैसे करें तो उसका database होना चाहिए आपके पास. अगर secondary study कर रहे हैं तो it should be testable. Relevant outcome sir, ये सब ध्यान रखना है. हमको research problem, वही मैं कह रहा हूँ ना आपको कि let me take an example, कि आपको बुखार हुआ. I started preparing medicines of fever. बट मैंने ऐसी मेडिसिन बनाई जिससे बुखार नहीं, जिससे खांसी जाती है, जिससे कफ जाती है. बुखार की तो बनी नहीं सर. आई गिवन यू दैट मेडिसिन. अब बोलेंगे क्या बनाया यार तूने, मुझे बुखार है, खांसी थोड़ी ना है. सो मेक श्योर कि जब आप प्रॉब्लम पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं आपको पता हो कि सर इस प्रॉब्लम से जो सॉल्यूशन है ना वो भी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा, किसी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आएगा. So relevant outcome, it should be relevant in results. And feasible. It must be feasible to conduct the research within the available time and resources. Brajendra sir, आपने ऐसा स्कोप लिया जो available time में आपको challenging हो रहा है deal out करना. See sir, ये बेस है हमारा. अगर आप बेस पे उसको संभाल लेते हैं ना तो मे बी वो चीज आपकी बच जाती. अभी भी थीसिस है सर आपकी या रिसर्च पेपर है? सर पेपर है. Sir, we can narrow it down. We can narrow it down. In the research methodology part, we will discuss how to narrow it down. If it's possible, we'll surely help you out, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Now the time comes. Now the time comes here. जो मैं 2 दिन से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, sir. Anyone tell me what is this? Cigarette. Cigarette. Thank you, sir. मैंने फिर से बताया कि फर्स्ट टाइम आई इन्वेस्टेड माय मनी ऑन सिगरेट. आई एम नॉट अ स्मोकर. बट दिस इज अ सिगरेट. आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बोला कि सर गिव मी अ सिगरेट. तो बोला कौन सी? नाउ इट्स अ गुड क्वेश्चन. उसका तो पूछना फर्ज बनता है ना. आई डोंट नो कि कौन कौन सिगरेट होती हैं. तो मैंने कहा यार कोई भी दे दे. गिव मी एनीवन. आई डोंट नो द नेम्स. आई टेल्ड हिम गिव मी एनीवन. So he told me double filter cigarette, double shot, sorry, double burst. Yeah, he told me double burst. हाँ चलेगी. Give me. कुछ भी है मतलब. I don't know what is double burst. तो देना कुछ भी. So I got this one. अब मैं एक research problem बनाऊंगा which should be a feasible one, and after then we will open this cigarette. Now, sir, see what is that unfeasible research question? Let's check. मैंने unfeasible की बात करी यहाँ पे, right? So I told it must be practical, it must be testable. A feasible question should be testable, practical, relevant, feasible. Now, this is my research question, sir. What is the effect of ghost sightings on the taste of cigarette? मतलब कि किसी ने भूत को देखा और आके वो सिगरेट पी रहा है. तो आई वांट टू टेस्ट कि उसका भूत देखने पे जो सिगरेट की टेस्ट पे फर्क पड़ा, क्या पड़ा.
सी सर, द लेवल ऑफ थिंकिंग सर कैसी जा रही है सर मेरी। मैं कह रहा हूँ कि आप भूत देख के आओ, मैं ऐसा सैंपल कलेक्ट करूंगा कि जिनको भूत दिखा उन्होंने आके सिगरेट पी, और मैं फिर पूछूंगा कि आपको सिगरेट टेस्ट में क्या फर्क लगा। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, दिस इज नॉट टेस्टेबल, दिस इज नॉट फिजिकल। आपको सैंपल ही नहीं मिलेगा सर। अगेन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेकिंग ब्राइब्स ऑन द हैप्पीनेस लेवल ऑफ फैमिली मेंबर्स। मतलब कि कोई बंदा ब्राइब रिश्वत ले रहा है, उसके घर वाले बहुत खुश हो रहे हैं। आई वॉन्ट टू मेजर दैट हैप्पीनेस लेवल। अच्छा, मैं जाके पूछूं कि सर अच्छा एमएलए की वाइफ है आप, एमएलए जी ने जो ब्राइब लिया था 5 करोड़ का, आपको कितनी खुशी हुई उससे? कोई थोड़ी ना बताएगा कि एमएलए जी ने ब्राइब ली है। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, दिस इज नॉट टेस्टेबल। These are the examples of unfeasible research questions. Third question, what is the impact of cigarette taste? मैंने थोड़ा स्पेसिफिक किया, टेस्ट पे स्पेसिफिक किया, ऑन द स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल, कि अगर कोई स्मोकर है तो उसका स्पिरिचुअल वेलबींग पे कितना फर्क पड़ता है। See again, this is not possible because spiritual experiences, firstly, they are not visible, they are eternal, and it differs from person to person. I cannot measure it. See, cannot be achieved within available time and resources, as it would require an analysis of spiritual beliefs and practices, which could be difficult to quantify and control. I cannot quantify the spiritual experiences. Also, spiritual experiences are subjective in nature and difficult to generalize. Now, I am taking example of a feasible research question. Feasible research question. Sir, I am opening the cigarette. Just give me a second. Let me open it. This is the filter, sir. इसके पीछे एक filter है. We call it as filter. I'm again opening it. Okay, इसमें सर 2 filter हैं सर. Double bus बोला था ना उसने. So there are 2 filters in it. Filters means a kind of sponge जिसमें से कि आपका जो smoke है वो filter होके आएगा. Okay. And what I found, if you are able to see, this is a small bowl. This is the first filter. Inside the first filter, this is a blue color. I think it's a flavor written on this, icy and fruity. So I think blue is the icy one. Okay, and this one, a small bowl in the cigarette, fruity flavor. These 2 balls I have, if you can see them. अगर मैं इसको, सर these are the breakable ones, मैंने इसको तोड़ दिया सर. I broke it down. छोटा सा सर 2 drops liquid के निकले, and they have a sense flavor of icy and fruity. और ये इतना strong है कि आपके हाथ पे आधे दिन तक रहेगा. Now, sir. Now, let me come back to my research question. अभी तक हमने किया कि घोस्ट साइट सीइंग का सिगरेट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का सिगरेट्स पे क्या फर्क पड़ेगा. Now let's take a feasible research question. See here, sir. What is the effect of menthol? See, in this cigarette it was icy, ice, and fruity. And there are more cigarettes which have menthol flavor. What is the effect of menthol flavor on the taste and sensation of cigarettes among young adult smokers? See the specificity, देख रहे हो specific कितना है वो, फ्लेवर को मेंशन कर रहा है, कौन सा फ्लेवर है, टेस्ट एंड सेंसेशन दोनों को मेंशन कर रहा है, किसका, सिगरेट्स का, among young adult smokers. Although वो अपनी जो पॉपुलेशन है उसको भी मेंशन कर रहा है कि यंग ही चाहिए मुझे, यंग और एडल्ट ही चाहिए मुझे. I don't need
the aged ones. Is it practical? Yes, sir, it is practical to conduct this study. Is it testable? Yes, sir. Young adult smokers. I have a lot of young adult smokers. I can test on them empirically. Relevant outcome आएगा? Yes, sir. किसके लिए आएगा? Cigarette industry के लिए आएगा. Whether they need to change the flavor of their cigarettes or not. Let us say कोई cigarette है, उसकी sale कम हो रही है. Let us say I need to check out the reason. So I can check out कि उसमें menthol flavor है. If we change the flavor, if we added the icy and fruity flavor, will it increase the sales of that industry? If yes, then yes, it will have a relevant outcome. And feasible है sir? Yes sir, feasible है. Time है मेरे पास, इतना resources है मेरे पास कि मैं इसको conduct कर सकता हूँ. I hope we are clear with how to frame a research question. I told you in the starting classes, the two most important things of a research. The first is research question. The second are research methodology. And the third one is the implications or discussions which you write in the paper. This was the class in which we have ended. What is, so see, it's now, I have a great smell of it, this one. So now, I hope step by step, we have discussed how to reach to a research question, and after reaching to it, how to frame a research question. What are the characteristics कि पिज्जा जो है साहब वो अच्छा बनेगा, खाने में मजा तो आए पिज्जा. तो रिसर्च क्वेश्चन ऐसा हो कि, एंड वन मोर थिंग, ए स्टार ए कैटेगरी जर्नल आपका पेपर रिजेक्ट और एक्सेप्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च क्वेश्चन. They just read their abstract, read the research question. If they think, yes, it is novel, it is very different, they accept your paper as they directly reject your paper. आपने एनालिसिस कितना भी अच्छा किया है, आपने उसके रिजल्ट्स कितने भी अच्छे निकाले हैं, रिसर्च क्वेश्चन से ही तो इम्प्लीकेशंस आएंगे ना. अगर क्वेश्चन ही अच्छा नहीं है, they reject your question. And the way to reach to a good research question, we just recently discussed. Okay, thank you so much. Have a nice day.